meet the data security compliance requirement. So you need to focus on cost, security, and bandwidth, right? So these are your primary goal. Like the data should be fast, it should be quickly, it should be retrieved. Then the cost should be minimum, right? And the third thing, like you also have to meet the security compliances that requirement that your environment should be more secure. So you focus on those all those things. Coming up to next, like scaling your VPC network with AWS Transit Gateway. So here you can see there is a network design with a multiple VPC, full mesh architecture and hub and spoke architecture we have. So you have that VPC, uh, which are four VPC which are connected in this architecture, and there you can see each VPC connected to one another. Like VPC A is connected to B, D, and C. B is also connected to D, C, A. D is also connected to B, A, C, and C is connected to D, B, A. So this type of architecture is called as a full mesh architecture, because in the mesh topology, you see each and every devices is connected to one another. Like this kind of topology, this type of architecture is bit complex, but it is you can say that like it's very fast, or also you can say that your communication will be very fast. And second thing is there will be a less chances of connection failures or data loss, because if you go ahead with that, if any of the your the connections from one device to the another device, or one VPC to another VPC is failed, so it doesn't mean that you cannot communicate to the other VPC, because you have the direct connection as well. Like VPC A and VPC is connected, VPC B is not responding. No problem, you can connect to VPC D, VPC C, or B is not, D is not responding, so you can connect to B, C, right? And that way you can have a communication, or you can connect through the, a different VPC to that VPC also. That is also possible. So this type of connection is, mesh connections. This is called as a mesh architecture, right? And it will move to the sub and spoke architectures. Hub, that is hub is what is a central device. You'll see here, like there is a one hub, and all the devices is connected to the hub. Okay, so here there will be lots of data loss chances will be there. Also, there will be a uh, connection failures. Also, there will be a in this situation, like if your hub is not responding, if hub is at any point of time is getting any failure, or any kind of fault in the hub, so at that situations all the connection will be free. The BPC A, BPC B, C, D, nobody will connect, and any of no VPC will be able to connect to any other VPC. But this all are connected to the central device, and if central device is not responding, it means that entire communication will be stopped. Entire communication will be uh, a fail in this particular situations. So this is called the hub and spoke architecture. But Mace is more more usable architecture in the industries, because you cannot rely on any one devices. Here you will see here they are relying on the central devices, right? So these are differences. Mace architecture and hub and spoke architecture. Let's have a look for this AWS Transit Gateway. So what is Transit Gateway? So it is a centralized regional router to connect the VPC and on-premises network based on hub and spoke architecture. Just now we have discussed, like there will be a centralized devices and which will be connecting to the all the VPCs based on hub and spoke architecture.
It is managed like a transit gateway is managed AWS service that automatically scales based on the volume of network traffic, and it can also pair with the other transit gateway in other AWS region and AWS account, and it incurs the cost charges based on the number of connections and amount of traffic throughput. Like it will connect to multiple VPC, so that definitely there will be a cost very high, and you also have to maintain that throughput. Like the cost will vary. I mean, based on the number of connections, and it has a transit gateway which flow along the features to it will publish the transit gateway traffic logs, and if there will be a gateway for that logs. So in this case, uh, like again, there will be a cost variations, and also there will be a right bandwidth variations. Also, you can see throughputs. If we come to the next part, like centralizing VPC routing pattern, like this type of architecture that you have seen in the labs multiple time, right? Like if you have a multiple VPC, like VPC one is for one zone, and you are configuring VPC two for another zone, right? Because in this particular module, we are understanding about how do you connect the multiple VPC. The main goal is that only, right? So one VPC is configured for availability zone one, and another VPC two is configured for availability zone two, and there will be a subnet one and subnet two. Subnet one is for this zone. This is another subnet, and where you'll see the Elastic Network Interface one and Elastic Network Interface two. And there, for each and every VPC, there is a route table which has been prepared. As you know, that the VPC itself is a networking services. So all the source destination IP that should be maintained, and it should be collected under the route table. So you can check it in this table as well. And here, like there will be a transit gateway. Here you will see the transit gateway attaching the VPC one and VPC two, right? So with the help of this gateway, you can connect the multiple VPC as well, right? And accordingly, if we're connecting the VPC, so there will be a IP source, destination, target. So accordingly, it should be maintaining the route table, transit gateway route table, where you can see the one IP that is destination for the target transit gateway, which attached 1D, VPC 1D, and another like 10.2.0.0/16, which will be another transit gateway, which will be attached to VPC 2 ID. Like this is for the second VPC. So their IP is different. Like you can see 10.2.0.0/16. This VPC2 IP you can see on the top. You can see here. So that we are talking about, and this is for VPC1, where you can see that 10.1.0.0/16. So this is for VPC1 ID, which will be configured under the route table. So here basically the transit gateway is helping to connect that different zones VPC, like different VPC, you can say that. So in this case, like both way, like your information will be coming like arrow. You can understand like from this side to this side or this side to this side. Both way communication will be done. Similarly, you can connect to that centralized routing pattern for the outbound traffic. So if you have the subnet, multiple subnet one, two, three, and which are under the different VPC. This is the address VPC, and this is VPC one. Similarly, we have to use transit gateway because we are connecting different VPC. Will be attached with the VPC one and VPC two, and
you are suppose you are connecting some private IP and all under this particular VPC. So you require NAT gateway and with the NAT of that your private subnet will be connecting to the internet. So on that case, you will be also connecting to the internet gateways. Sir, what is mean by egress VPC? This is a kind of VPC like which will be like we are using some VPC in the different zone, right? So like initially we have used VPC one, VPC two, and here you can see like there will be a different. They have not mentioned the different zone, but they have configured that different VPC, which will be they have given the name like one is VPC one, and then there will be a egress VPC. So that will be basically uh, when you are connecting to the internet. Like at the end, you have like VPC is the what is networking services, right? So when you are connecting the any virtual private environment, and that is the case like we are using the outbound traffic, right? So when you'll when your data will be going over the internet, so where how it will be handle all the outbound traffic. So for that case, we generally prefer that centralized devices where we can configure this particular VPC that is named as called as a egress VPC, which will handle that all the outbound traffic and uh, wherever it is coming like from the outsources to your private networks. So for that case, you can use this type of VPC. So basically, it's just a kind of VPC. We have that multiple VPC, like VPC we are connecting in our environment, like VPC 1, 2, 3, and so on, right? And there will be some specifications on that. So mostly for handling all this, outbound traffic or internet traffic. So for that cases, we uses this type of VPC, and also it provide that secure environment. Like generally all VPC provide that secure environment. So mostly the main goal of this particular egress VPC is that which will be connecting to the outbound traffic. I mean where you can minimize as much as possible, and it can handle that all the outbound traffic from this other VPC if it is coming. Like this VPC is connected to VPC one. If you have some other zones, and there also if you have some other VPCs, VPC 2, 3, 4, right? So when all are connected to one another, but this particular VPC, egress VPC, is having this kind of capabilities or the features, you can say that, to handle all the outbound traffic from that any other VPC whenever it is coming that packet from there. So that is the main goal of this particular VPC. And if we'll come to this egress route table, so accordingly, like we are connecting multiple subnet in this particular VPC, like subnet 2, subnet 3, and then there some IPs has been allocated for each and every subnet. So you can keep it in the route table, like how normal VPC route table you create. Similarly, there will be a route table for the egress VPC, where you will be having destination and the target. So you can refer to this 10.2.0.0/16. That is for the local, and if you will go for the 10.1.0.0/16, that is for the transit gateway ID, which will be connected to this particular VPC, because transit gateway will be attached to all the VPC. At the end, we have to connect to the gateways, right? So all the VPC 1, 2, or egress VPC all will be connected to the transit gateways. So first of all, you have to attach, right? Like how to attach, that in the lab, how to do that. Similarly, that same process that we use in this case also. Simply, you have to attach this VPC to transit gateways. So that's why they have mentioned over here, like attaching this. And accordingly, there will be whatever the VPC and the subnet which will be attaching. So for that, each and every subnet is having their own IP.
and check with that. So that information they have kept it over here. Now look at here for the transit gateway peering. Like we have the two account, AWS account 1 and 2, and there you are creating that multiple VPC for particular region. And here another region we have that is called as a B. This is a region A and this is a region B. So in this region, like you will find that two VPC, VPC1 and VPC2, where you will see that there is a one IP that is allocated for this VPC, and for this VPC also we have another IP and which will be connected. If whenever you are connecting that VPC, then you have to use the transit gateway, which will be connecting multiple VPC. This is one of the service on AWS platform, right? And then another zone again we are connecting to that particular account, I mean of account A or account 1. We have two accounts, like suppose your account and some of your friends account. You can take an example of this. So in your account and your friends account, your friends is connected in US East region, and you have connected in Asia Pacific region, right? So you are from Asia, they are from the US, okay, US Pacific, US region, and in this side, if you are connecting both the accounts of both the account in the sense of both the region, you are connecting it, and there we can see that there will be a BPC which will be allocated on that. Just a minute, guys. Okay, so am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just look at here. We were discussing about the different account, yours account and your friend account. So they are from the different regions and they are connecting to the transit gateway, which is one of the service which will be creating a kind of peering connections in the sense of different VPC. You are keeping it in the different region, or you are connecting different region with the direct different subnets which is associated with the VPC. So for that purpose, we use transit gateways. So here you can see there are two VPC from one region and one VPC is connected from the another region, right, of the another account. And both are having their transit gateways. So one is for this VPCs. Do you need this transit gateways, guys, for this VPC? If you have directly VPC is connected, so do you need this transit gateway? Or without transit gateway, can you connect to this transit peering attachment? For different नो reason, I सर मतलब चाहिए सर So why? Tell me reason. maybe sir it can be from different reasons, and BPC No, is like local network size. this one is there ना. So transit gateway peering तो यहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट VPC कनेक्ट कर सकते थे, फिर ये वाला क्यों चाहिए ट्रांजिट गेटवे बी? सर मतलब और प्रिसाइज होगा और भी बीपीसी कनेक्ट कर सकते हो अगर हाँ तुम्हारे पास इस सर। रीजन में, अगर मान लो बीपीसी तुम्हारा ये 3 है, और भी बीपीसी अगर हमें कनेक्ट करना है, तो हमें गेटवे के थ्रू जाना होगा, ट्रांजिट गेटवे।
सिंगल बीपीसी है तो दिक्कत नहीं है, हम कनेक्ट कर सकते थे डायरेक्टली ट्रांजिट गेटवे पेयरिंग अटैचमेंट के साथ। बट और अगर बीपीसी इस रीजन में कनेक्ट करना है और भी बीपीसी क्रिएट करना है, उसको भी अटैच करना है, तो आपको फिर ट्रांजिट गेटवे के थ्रू जाना है, क्योंकि मल्टीपल जब बीपीसी होता है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें ट्रांजिट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे तुमको उसको क्रिएट करना होगा और उसको अटैच भी करना पड़ेगा। So accordingly, this they have created that route table for both the region. एक रीजन ये वाला है वन के लिए, और ये टू रीजन है उसके लिए गेटवे बना है, और उसका राउट टेबल है, और उसके आईपी वगैरह यहाँ पे डाले गए हैं। नेक्स्ट, इफ विल कम टू द कंपनी ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट यूज केसेस। सो हियर जस्ट लुक एट द सिनेरियो, इसको समझो तुम लोग पहले अच्छे से। A company has multiple IT department, right? Each with their own BPC. ठीक है, some VPC are located within the same AWS account and other in a different AWS account. तो ये वही है पिछले वाला जो सिनेरियो हमने लिया है कि कुछ VPC जो है एक रीजन में है, कुछ VPC है दूसरे रीजन में है। वैसे ही यहाँ पे जो है तुम्हारा जो कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट, उसके पास बहुत सारे मल्टीपल आईटी डिपार्टमेंट हैं और उनका खुद का VPC है। और VPC जो लोकेट हुआ है लाइक आर लोकेटेड विद इन द सेम AWS अकाउंट। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट अनदर दो चीज है, इसको समझना। कुछ बीपीसी हैं जो कि सेम अकाउंट में है, जो कि जैसे अकाउंट वन था हमारा, है ना, अन्य अकाउंट टू था। अभी इस डायग्राम ब्लॉक डायग्राम को भी हम लोग देखेंगे। एंड अदर इन द डिफरेंट AWS अकाउंट, ऑल द बीपीसी शुड बी पेयर टुगेदर टू let the IT department have full access to each other resources. The company is considering adding account of other business groups in the future. तो ये वही केस है अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। AWS अकाउंट डिपार्टमेंट ए एंड बी का है, उसके लिए बीपीसी, दो बीपीसी इसके लिए क्रिएट कर दिया गया है। एक और अकाउंट डिपार्टमेंट है सी है, उसके लिए बीपीसी सी क्रिएट किया गया है। डी एन ई आईटी डिपार्टमेंट है, उसके लिए अनदर बीपीसी किया गया है। सारे बीपीसी को कनेक्ट करना है तो हम लोग को ट्रांजिट गेटवे चाहिए, और सेपरेटली यहाँ पे भी एक अटैचमेंट करना पड़ेगा गेटवे का, जो कि यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दिखाया नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट गेटवे वन, गेटवे टू लाइक दैट वे, और ए और बी लाइक दैट वे यू हैव टू क्रिएट इट हियर इनसाइड दिस अकाउंट। यहाँ पे एक ट्रांजिट गेटवे का रखना पड़ेगा, यहाँ पे गेटवे होगा, यहाँ पे गेटवे होगा, उन सारे को एक ट्रांजिट गेटवे से कनेक्ट करोगे, मेन सेंट्रल गेटवे से। तो ये जो है बेसिकली हमें रिसोर्सेस को अगर शेयर करना है सारे डिपार्टमेंट के साथ, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल बीपीसी को हम लोग को कनेक्ट करना होता है गेटवे के थ्रू। तो वो वही चीजें यहाँ पे इस सिनेरियो में भी बताया गया है। नाउ यू कैन गो ahead with this activities what they're asking activity: configure AWS transit gateway routes. Configure routes for 5 VPC that you want to connect to each other through transit gateways. देखो ये 5 VPC यही है, सर ए बी सी डी ई, इनको कनेक्ट करना है। हाँ बोलो। सर मतलब मॉड्यूल का स्टूडेंट गाइड में एक लिखा है अल्टरनेटिवली इफ वन वीपीसी नीड्स टू एक्सेस only one other VPC, the route tables can be updated to limit traffic to the specified IP address range of target VPC. सर ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या लिखा है फिर से बोलो, एक बार रीड करो, स्लोली स्लोली रीड करो। Okay, sir. Alternatively, if one VPC needs access to only one other VPC, हम्म, the route tables can be updated to limit traffic to the specified IP address range of the target VPC. हाँ ये तो सिंपल है ना। अरे एक डेस्टिनेशन जो राउट टेबल जो फिल कर रहे हो ना, तो तुमको जो है दो बीपीसी का कनेक्शंस हैं। अगर तुम्हारा एक बीपीसी दूसरे बीपीसी दूसरे रीजन में या दूसरे अकाउंट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप राउट टेबल में सोर्स और डेस्टिनेशन को उसके हिसाब से फिल कर दो। सोर्स हमारा जो बीपीसी ए है सपोज, और डेस्टिनेशन तुम्हारा बीपीसी बी है, तो उसी हिसाब से कनेक्शन तुम्हारा जो है, जो एस्टेब्लिश तुम करोगे, ट्रांजिट गेटवे ए और बी का कनेक्ट करोगे, बाकी को छोड़ दो, उसको कनेक्ट अटैच मत करो। मतलब तुम्हारे पास जैसे यहाँ तुम्हारा वो जो क्वेश्चन है, या इस सिनेरियो से समझो। जैसे मान लो मेरे को बीपीसी ए और सी को कनेक्ट करना है, हाँ, मेरे को बाकी का कनेक्ट नहीं करना है, इसका एक बीपीसी और इसका एक बीपीसी, ए और सी कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ट्रांजिट गेटवे से नहीं ऐड करेंगे, बाकी बीपीसी को नहीं करेंगे, हम इन्हीं दोनों को कर देंगे। और जो हमारा नया राउट टेबल जो क्रिएट होगा,
उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर क्या रहेगा, वीपीसी ए का डिटेल रहेगा, सी का रहेगा, तो यही एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, ये लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड व्हाट देयर आस्किंग? जी सर। Okay, so just have a look for configuring route for the 5 VPC that you want to connect to each other through the transit gateway that we have seen this now. So we have to configure the routes in the VPC, that is the route table. So configure routes in the VPC route tables, and then we have to configure the routes in the transit gateway route table. तो ये दोनों ही डिटेल तुमको फिल करना पड़ेगा। एक तो राउट्स को वीपीसी राउट टेबल में फिल होगा और ट्रांजिट गेटवे में, क्योंकि जो भी वीपीसी का जो डिटेल होगा वो उससे सबनेट से रिलेटेड होगा। जो वीपीसी का जो राउट टेबल होगा ना, तो वीपीसी के अंदर होता है प्राइवेट पब्लिक सबनेट वगैरह, उसका डिटेल रहेगा, और वीपीसी का खुद का जो आईपी जो जनरेट हुआ रहेगा वो रहेगा तुम्हारा। लेकिन ये ट्रांजिट गेटवे का जो राउट टेबल बनेगा उसमें एक ही वीपीसी नहीं रहेगा उसका डिटेल, वो सारे वीपीसी का डिटेल वहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये इसीलिए दोनों का राउट टेबल इंपॉर्टेंट है, दोनों सेपरेट राउट टेबल क्रिएट करेंगे, कि तुम पिछले स्लाइड्स में तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगर द वीपीसी राउट टेबल, तो which routes are necessary to add to each of the VPC route table to provide full connectivity between all 5 VPCs। तो देखो सारे VPC का जो है अपना VPC CIDR वैल्यूज दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, और एक आईडी जो अटैच हुआ है हर VPC के लिए ट्रांजिट गेटवे के साथ, वो यहाँ पे देख सकते हो TG W, ये जो भी आईडी है VPC ABC एंड सो ऑन, राइट। एंड VPC राउट टेबल का एक आईडी क्रिएट हुआ है RTB VPC ABC, एंड राउट टेबल का डेस्टिनेशन एंड राउट टेबल का टारगेट। तो क्या होगा, किससे किसको कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम्हारा डेस्टिनेशन और उसका टारगेट डिटेल यहाँ पे तुम्हारा फिल होगा अकॉर्डिंगली। Okay, now there is another case that you have to configure the transit gateway one route table. Which routes are necessary to add to the transit gateway one route table to provide the full connectivity between all 5 VPCs? देखो ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल का डेस्टिनेशंस एंड ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल का टारगेट, ये किससे किस वीपीसी को किससे कनेक्ट करना चाह रहे हो, किससे कम्युनिकेट करेगा, है ना। वो डिटेल यहाँ पे तुमको स्पेसिफाई करना होगा, कि जितने भी क्वेश्चन मार्क्स जो दिए गए हैं ये वही बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी तुम समझ सकते हो कि जो तुम्हारा बीपीसी का राउट टेबल जो क्रिएट हुआ है, बीपीसी ए है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, जैसे इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है आईपी। जैसे हमारा इस वैल्यूज में आईपी कुछ दिया नहीं था, बट एज्यूम करके चल रहे इस सिनेरियो को ले सकते हो तुम लोग, बट ये सिनेरियो में और इसमें देखो इसको कंसिडर करोगे, अगर यहाँ पे 2 अकाउंट के लिए था, ए और बी अकाउंट के लिए, और यहाँ पे तुम्हारा बीपीसी 3 ही बीपीसी था, ये 5 बीपीसी का कंडीशन है। तो ये आईपी तो खुद से एलोकेट किया है इन लोगों ने, अपना एग्जांपल के लिए बता दिया कि है ये आईपी जो है हमारा राउट टेबल का डेस्टिनेशन है, और किसको टारगेट तुम्हारा कौन सा रहेगा। तो सब हर बीपीसी जाके कनेक्ट पहले हो रहा है किससे, तुम्हारा इससे इंटरनेट, ये तुम्हारा जो है ना ट्रांजिट गेटवे इससे कनेक्ट हो रहा है। तो पहले जो टारगेट जो होगा ये तो सेम ही रहेगा सबका, है ना। लेकिन हाँ कम्युनिकेशन जब एस्टेब्लिश होगा, ये इसको अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसके थ्रू ही जाएगा। ट्रांजिट गेटवे एक सेंट्रल हब रहेगा, एक हब डिवाइस की तरह काम करेगा, एक सेंट्रल डिवाइस की तरह। तो जो कम्युनिकेशन होगा इसके थ्रू होगा, राइट। इसलिए इसमें टारगेट में इन लोगों ने सेम ही रख दिया है। देखो वीपीसी टेबल टारगेट में TGW ट्रांजिट गेटवे 1111 ये दे दिया है, और डेस्टिनेशन भी तुम्हारा उसका आईपी डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट केस में अगर जाओगे, अगर तुम ट्रांजिट गेटवे का राउट टेबल अगर देखोगे, ट्रांजिट गेटवे में डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अलग अलग बीपीसी से आ रहा है। तो तुम्हारा ट्रांजिट गेटवे का डेस्टिनेशन जो है पहला जो है बीपीसी 1 के लिए रहेगा, फिर 2 के लिए रहेगा, 3 4 5 ABCDE तक के लिए जाएगा। लेकिन राउट टेबल में बीपीसी का जो डेस्टिनेशन जो होगा वो सबका सेम होगा। क्यों सेम होगा, समझ आ रहा है तुम लोग को, क्यों ये सब सेम आईपी दिया है और टारगेट भी सेम लिखा है ट्रांजिट गेटवे, बताओ। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। सर बीबीसी राउट केवल डेस्टिनेशन में सब बीबीसी को एक बीबीसी में बीबीसी गेटवे से कनेक्ट कर रहा है। हाँ सब एक ही से कनेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पे जो ये ब्लॉक डायग्राम है, सारे वीपीसी इससे कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो, ट्रांजिट गेटवे से सब इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब ट्रांजिट गेटवे का राउट टेबल बनेगा
तो उसमें सारे बीपीसी का डिटेल रहेगा, बीपीसी ए बी सी डी ऐसे रहेगा। देखो ट्रांजिट गेटवे में क्या है, सब रहेगा, बीपीसी ए बी सी डी ये रहा। लेकिन जब हम इसका राउट टेबल देखेंगे, बीपीसी राउट टेबल, तो उसके लिए बीपीसी तो जो भी है वो तो डिफाइन करोगे, उसका आईडी वगैरह अगर जो ले रहे हो वो डिफाइन करोगे। लेकिन अगर हम टारगेट कर रहे हैं किसको, डेस्टिनेशन हमारा अगर इंटरनेट सॉरी ट्रांजिट गेटवे है, तो हमें उसी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बीपीसी राउट टेबल टारगेट में ये रहेगा, TGW1, आई मीन ट्रांजिट गेटवे 1, ट्रांजिट गेटवे 111, आई मीन द फर्स्ट वन वी हैव टू टारगेट। अच्छा एक चीज और है, बीपीसी राउट टेबल का आईडी जो जनरेट हुआ है, तो देखो राउट टेबल का आईडी ये जो है एक पर्टिकुलर बीपीसी के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो बीपीसी ए इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अगर हम देखें ट्रांजिट गेटवे बीपीसी अटैच आईडी जो होगा, वो किसी एक का नहीं है, वो सब लोग अटैच किए हैं ट्रांजिट गेटवे से। बीपीसी ए भी किया है, बी भी अटैच किया जाएगा, सी को भी, डी को, सबको अटैच किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सबका अलग अलग डिटेल है, ए बी सी डी ई ऐसे करके गया है, और उनका रेस्पेक्टिव आईपी जो है, CIDR वैल्यूज, वो तुम्हारा डिफाइन किया गया है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। नाउ हैव अ लुक फॉर द की टेकवेज जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसको पढ़ो, ऑल 4 बुलेट्स, गो अहेड विद दैट। So this transit gateway, I have one question. Can you answer? All of you, those who know the answer, reply in the chat. So the question is that we are connecting here transit gateway. Okay. So transit gateway is which type of architecture they are following? Is it this is architecture of uh, central hub architecture, or some mesh architectures? You have seen that, na? A hub spoke model and full mesh model. So which type of model it follows? Hub and spoke model or full mesh model? Which type of model transit gateway follow? Just reply in the chat. Okay, very good. Good answer. All of you are answering. All of you just answer. ठीक है, सबका आंसर सही है। अच्छा ये एक क्वेश्चन आया है मेरे को संदीप की तरफ से, सर डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रांजिट एंड इंटरनेट गेटवेज। ओके, तो देखो ट्रांजिट गेटवे और इंटरनेट गेटवेज तो टोटली डिफरेंट चीज है। लाइक अगर तुम देखोगे इंटरनेट गेटवेज का क्या काम था, हम लोग बहुत सारे लैब भी किए हैं कि वो बेसिकली कनेक्ट कर रहा था बीपीसी को इंटरनेट से, राइट। और थ्रू तुम लोग का एक पब्लिक सबनेट हुआ करता था और एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था, पब्लिक सबनेट बीपीसी एंड ओवर द इंटरनेट, राइट। ये चीज हम लोग देखते हैं इंटरनेट गेटवेज में, कि हम लोग का बीपीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रोसेस जो है थ्रू द इंटरनेट गेटवेज वी कैन अचीव दैट, दैट इज द केस ऑफ इंटरनेट गेटवेज।
And if you have instances under the VPC, so you can communicate uh, with the internet uh, from the instances of the VPC, right? So that kind of things we can do it through the internet gateways, right? But when I will talk about that transit gateways, so transit gateway is totally different things. ये एक सेंट्रल डिवाइस की तरह काम करता है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल VPC को और मल्टीपल नेटवर्क को. आइदर यू कैन से दैट इन दिस रीजन्स और डिफरेंट रीजन्स, एक पर्टिकुलर रीजन में और डिफरेंट रीजन को भी उसके जो डिफरेंट VPC हैं उनको भी कनेक्ट करने के लिए ये जो है ट्रांजिट गेटवे को यूज किया जाता है. अब फिर ट्रांजिट गेटवे को ओवर क्लाउड लेके जाना है अगर हमें, या ओवर इंटरनेट लेके जाना है, तो फिर उसके लिए भी हमें इंटरनेट गेटवे चाहिए होगा. ऐसा नहीं है कि इंटरनेट गेटवे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ भी चाहिए इंटरनेट गेटवे. ये तो VPC को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग इंटरनेट की बात करेंगे फिर इंटरनेट गेटवेज को वहां जरूरत पड़ेगा, राइट. तो ये है डिफरेंसेस. ठीक है, तुम लोग आंसर सही कर रहे हो, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर. आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस ऑल दिस बुलेट, राइट. तो ये हमारा बेसिकली था क्या, तुम्हारा स्केलिंग योर VPC नेटवर्क विद द ट्रांजिट गेटवेज. तो अभी तक हम लोगों ने स्केल अप वगैरह जो भी चीज सीखा वो ट्रांजिट गेटवे का था, मतलब सेंट्रल हब डिवाइस के थ्रू सीखा हमने, है ना. तो एक और भी था मेस, फुल मेस कनेक्शंस. Hello, sir. या टेल मी. Sir, what is hub and spoke? अब हब एंड स्पोक ये तो नाम है, एक दिया गया है कि हब स्पोक डिवाइस. देखो हब तो एक जैसे तुम लोग नेटवर्क में पढ़े होगे, एक स्विच होता है, हब होता है, राउटर होता है. तो हब का क्या काम है, वो उसका इंटेलिजेंस ही कम रहता है, वो हर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करते रहता है ना. मतलब जितने भी मैसेजेस आएंगे डिफरेंट डिवाइसेस से, तो उसको जो है तुम्हारा उसको फॉरवर्ड कर देगा सबको. मतलब क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा हर मैसेज को. जैसे तुम सेंड किए, आपके पोर्ट पे गया, और उसने क्या किया, उस हब डिवाइस ने जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है, वो हर उसके जितने भी पोर्ट्स थे उस पे वो मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है. इसलिए गेमिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता था पहले हब. और ये इसीलिए इसका नाम, क्योंकि एक सेंट्रल डिवाइस होता था, राइट. ये जो कनेक्शंस जो बनाया गया है, ये हब एंड स्पोक मॉडल बना क्रिएट किया गया है. तो ये जैसे होता है ना स्पोक, तुम लोग तो नॉर्मली हिंदी में समझते होगे. तो एक क्या बोल सकते हो उसको, एक पोर्ट बोल सकते हो, या उसका एक इंटरफेस बोल सकते हो, एक पेरिफेरल पॉइंट बोल सकते हो, जो कि वो कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल VPC को. इसलिए इसका नाम दिया गया हब एंड स्पोक मॉडल. कि ये एक स्पोक है जो कि जाके वो एक पेरिफेरल पॉइंट पे और एक पोर्ट पे उसको सारे VPC को कनेक्ट कर रहा है सेंट्रली. आई मीन जो कि जैसे हब काम करता है, हब का भी वही काम है, सारे डिवाइस को कनेक्ट करेगा और ब्रॉडकास्टिंग करते जाएगा, सबको सेम मैसेज पे पास करेगा जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उस हब के साथ. तो वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही होता है प्रोसेस. यहाँ पे जो होता है हब एंड स्पोक मॉडल में बेसिकली सब VPC जो है सेंड करेंगे अपना इंफॉर्मेशन, और ये जो ट्रांजिट गेटवे जो है उसको गैदर करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा डिफरेंट किसके, डिफरेंट VPC को. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है. हाँ, ये आर्किटेक्चर हब की तरह होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया हब एंड स्पोक मॉडल. बट हर पैकेट को सारे VPC को नहीं भेजा जाता है. यहाँ ये मॉडल थोड़ा अलग है. ट्रांजिट गेटवे का काम हब की तरह काम नहीं करेगा. हाँ, इसका आर्किटेक्चर हब की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया हब एंड स्पोक मॉडल. अंडरस्टूड. क्योंकि ये सेंट्रल डिवाइस की तरह काम कर रहा है ना, यहाँ पे सारे VPC को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, राइट, सेंट्रली. So that's why they have given the name of hub and spoke. And spoke is just like एक peripheral point समझ सकते हो. That is it's just like a spoke. और बोल सकते हो पोर्ट बोल सकते हो, इसलिए hub and spoke इसका नाम, मॉडल का नाम दिया गया. Okay, so let's move ahead with the next peering, next VPC connections जो कि हमने अभी देखा था. दो टाइप हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग ऑफ दिस मॉड्यूल. एक तो था सेंट्रल हब एंड स्पोक मॉडल था, और एक फुल मेश देखा था हमने. यस टेल मी. सर मेरे AWS ओपन नहीं हो रहा है. AWS क्या है, अकाउंट? यस सर. क्या फर्स्ट पहले तुमने लैब किया था, या अभी ओपन नहीं हो रहा है, या पहले से नहीं हो रहा था?
तो मैंने 4 लैब कर लिया है अभी, फिर ओपन नहीं हो रहा है अभी। 2 लैब से ओपन नहीं हो रहा है, तो मेरा असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हुआ है। Study, you were there only, those who I have added the account, like from the personal email ID. No sir, no. Study you were us or someone else? So it was someone else. Okay. AWS account एक बार स्क्रीन शेयर करो। Yes sir. तुम लोग का जो इशू आ रहा था वो हो गया रिजॉल्व? वो जो ग्रुप में मैसेज कर रहे थे तुम लोग? सर मेरा एक इशू हो रहा है, वो चैलेंज लैब में वो एसएसएच की डाउनलोड नहीं हो रहा, वो पीपीके फाइल। पीके फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारे इंटरनेट का तुम्हारा ठीक से काम नहीं कर रहा वो होगा। वहाँ पे एरर दे रहा है, कॉन्टेक्ट योर एडमिन करके। कॉन्टेक्ट योर एडमिन। आपको मैंने वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे लाइक मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, ऊपर दे रहा है दिस कंटेंट वायलेट्स द सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट योर एडमिन। कौन सा फाइल डाउनलोड कर रहा था, पीएम और पीपीके? पीपीके मैं विंडोज में हूँ। अब तो हो जाएगा तुम्हारा। नेटवर्क कौन सा कनेक्ट किया था, पर्सनल हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था? पर्सनल हाँ नेटवर्क, हाँ वाईफाई? हाँ हाँ, पर्सनल वर्क सर, मैं तो घर पे हूँ सर, तो पर्सनल हाँ, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करिए। तब तो हो जाना चाहिए। बाकी लोग का तो हुआ है सबका, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? एक बार तुम भी शेयर करो स्क्रीन। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ सिद्धार्थ। शुक्ला? हाँ सिद्धार्थ शाह। सिद्धार्थ। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए सर। सर मैं फोन से ज्वाइन की हूँ, तो स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम। सिद्धार्थ तुम शेयर करो। सर पिछला हाँ लैब सर कर तो रहा हूँ। हम लोग पीपीके और पीईएम फाइल इंस्टॉल करके वो हम लोग। पीएम है, पीएम उसको करना है जिसके पास लाइनस होस्ट ओएस है या हाँ मैक सर, है। बट उसका कहीं यूज हमको मतलब लैब में दिखा नहीं, हमको कंप्लीट कर दिए उसको नॉर्मली। बस वो जो हम लोग अरे वो वहाँ। कनेक्ट करने के लिए था, वो एक्चुअली पीपी के फाइल जो था ना, वो लिनक्स को, तुम्हारा जो इंस्टेंस जो बनाए थे, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करने का था। ऐसा नहीं है कि जो पुटी से कनेक्ट करोगे तभी होगा, डायरेक्ट भी कनेक्ट करके कर सकते हो। वो सिखाया गया था कि आप पुटी कैसे यूज करोगे। पुटी एक टूल है जो कि हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी इंस्टेंस का जो है, अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में किसी रीजन में कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको रिमोटली अगर हमें एक्सेस लेना है, राइट, ठीक है, तुम्हारे पास इंस्टेंस है तो तुम तो इमिडिएटली उसको कनेक्ट कर लोगे, वहाँ पे एसएसएस में जाके कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई रिमोटली तुम्हारे इंस्टेंस को ट्रबल शूट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास तो तुम्हारा लैपटॉप नहीं है, उसके पास डिवाइस नहीं है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए वो पुटी अगर उसके पास है, तुम अपना आईपी अगर दे दोगे इंस्टेंस का आईपी, तो वो अपना जहाँ भी रहेगा वहां से आपके डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। वो आपके इंस्टेंस को कनेक्ट कर, कुछ इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके इंस्टेंस में, तो सीखा गया है उस लैब में कि आप पुट्टी को कैसे एनेबल करोगे, पुट्टी को कैसे एसएसएस से कनेक्ट करके, और आप अपने इंस्टेंस को कैसे उसमें उसके अंदर कमांड वगैरह डाल सकते हो, स्टार्ट स्टॉप कैसे करो, एवरीथिंग, आई मीन हाउ डू दैट, यस दैट सर। थिंग दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर lab. Yes, who was sharing screen? सर तो पुटी वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं क्या, क्योंकि कल पूरा टाइम मेरा पुटी में ही एरर आ रहा था, मतलब आप पता नहीं पुट्टी कनेक्ट नहीं स्किप, हो रहा था। पुट्टी का स्किप कर सकते, उसको अपडेट वगैरह मारो, उसके बाद वो सर होगा वो स्क्रीन पुट्टी शेयर का। के लिए परमिशन मांग रहा है। एक एक मिनट रुको, ये किसने किया है स्क्रीन शेयर? सिद्धार्थ से जस्ट वेट।
आई विल अलाउ यू, जस्ट वेट, लेट हिज प्रॉब्लम रिजॉल्व। हाँ, तुम्हारा क्या इशू था? डाउनलोड कर रहा था, नहीं हो रहा था, राइट? जाओ तो डाउनलोड में, डाउनलोड पीपीके करना है ना तुमको। कंटेंट ऑन दिस पेज वायलेट द सिक्योरिटी पॉलिसी, कांटेक्ट योर एडमिन फॉर असिस्टेंस। अच्छा, ये तुम्हारा ये कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह आईसीटी सेल ने ये कर दिया, नेबल करके छोड़ दिया है। इसलिए सॉफ्टवेयर उन लोग को बोलना पड़ेगा, वो उन्हें, नहीं तो तुम खुद चेक कर रख सकते हैं ऑनलाइन कि क्या उसमें क्या चेंजेस करेगा। ये अलाउ नहीं कर रहा है तुम्हारा दूसरा फाइल को डाउनलोड करने का। नहीं तो दूसरे दूसरा बच्चों से ले ब्राउजर में सकते हो, ओपन करके भी। किसी से ले लो, और कोई फ्रेंड से ले लो, पीपीके फाइल वही डाल देना। डाउनलोड पुटी डाउनलोड हो रहा है तुम्हारा? यहाँ से डाउनलोड में जाओ तो पुटी सॉफ्टवेयर है तुम्हारे लैपटॉप में? इज इट देयर सिद्धार्थ? हेलो सर। या डू यू हैव द पुटी सॉफ्टवेयर हाँ इन हाँ, लैप? पुटी हाँ मेरे पास। ठीक है, तो पीपीके फाइल कोई शेयर कर दो, और व्हाट्सएप में या गूगल ड्राइव में कहीं भेज सकते हो। हाँ, मेल। यहाँ पे लाइक ये दोनों पे ये लाइक ये सेम एरर ही दे रहा है। लाइक लैब अगर मैं स्टार्ट एंड करके भी करूँ तो भी ये हाँ, आ रहा है। वो एडमिन का ये किया है, तुम्हारा पॉलिसी सेट कर दिया है, तुमको दे नहीं रहा है एक्सेस। ठीक है, ओके किसी और से लेके तुम डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम ही डाउनलोड करेगा तभी कर पाओगे। अच्छा इट्स अच्छा, ठीक है ठीक someone है। can share and you can use that, that's not an issue। ओके ओके। तो ये पार्ट अगर लाइक नहीं मिले तो ये पार्ट क्या ना लाइक स्किप कर सकता हूँ, ये पुटी तो वाला स्कोर पार्ट? कम आएगा, स्कोर कम हो जाएगा स्किप करोगे तो। ओ। वो बोला है कि आपको कनेक्ट करके सीखना है आपको, दैट्स सर व्हाई दे। पुट्टी वाला पार्ट नहीं करने पे भी सर स्कोर सेम ही रह रहा है। हम कल बिना पुट्टी का किए सर हो तो गया, तुम सेम एक आया। ही ऐप कनेक्ट कर हाँ, ये दिया होगा, डाउनलोड करके। तुम एसएसएस से कनेक्ट किया होगा, इसलिए तेरा सेम आया होगा। तुम एसएसएस से कनेक्ट किया था उसको डायरेक्ट? अरे जो भी अंदर में AWS कंसोल में दिखा रहा था ना सर, बस उतना ही किया। मतलब तुम कमांड तो चलाया था ना, या नहीं चलाया? नहीं सर, कोई कमांड नहीं। नहीं सर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो इलास्टिक आईपी से सब कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो हाँ नहीं वही, जरूरत पड़ रहा है। यस सर, इसी इलास्टिक क्योंकि आईपी से दोनों कनेक्ट का कर दिया। वर्क सेम ही है, मतलब हम्म, बस अलग अलग वो है। इसीलिए तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या सीएलआई को कनेक्ट किया था? तो कनेक्ट किया है तो फिर दिक्कत नहीं है। इसी वे में कनेक्ट करो, इधर पुटी से कनेक्ट करो, हाँ या उसको डायरेक्ट ओवर इंटरनेट अपना आईपी यूज करके कनेक्ट कर सकते हो, तो दोनों चीज सेम ही है। आई उधर भी कमांड, उस प्लेटफॉर्म में पुटी कनेक्ट करोगे तो वहाँ भी लिनक्स का तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा, वहाँ उसका सीएलआई में जाके कमांड रन करना है। इधर सर डायरेक्ट कनेक्ट कर ले रहे हो लिनक्स तो में भी उधर भी करूंगा वही। तो मुझे तो पीएम फाइल तो चाहिए यहाँ पे जो है SSH एट, ये पीएम फाइल तो मुझे चाहिए फिर भी। नहीं नहीं, सीधा तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा जनरली अच्छा। बोल रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स। यू ओके डोंट ओके। रिक्वायर पीएम फाइल इवन, योर या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यू डोंट नीड पीएम फाइल। पीपीके फाइल is required, that is restricted, so you can connect to any of the friend and get that this file and you can upload it in here. Otherwise you can skip this, you can directly connect to your instances through the ओके 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 IP, through the public IP। ओके तो ओके। जो पहले करते आ रहे हो तुम लोग, पहले तो पुटी थोड़ी कनेक्ट करते थे, नहीं पहले तुम नहीं। लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते थे ना इंस्टेंस को, तो वही हाँ। इंस्टेंस को सेलेक्ट करो और कनेक्ट कर दो डायरेक्टली थ्रू द पब्लिक आईपी। वो एक्सेस मिल जाएगा, फिर वहां से कमांड तुम रन कर सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस, या नेक्स्ट पर्सन यू कैन स्टॉप थैंक यू योर। सर। और किसका डाउट था? ये किसका स्क्रीन शेयर चाहिए? हु वाज सर दैट? मैंने हैंड रेस कर दिया है। ओके, जस्ट शेयर इट नाउ।
सर ये AWS ओपन कर दे तो फिर ऐसा आ रहा है सर। फुल स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारा मेल ओपन हुआ है। तुम मोबाइल फोन से कनेक्ट किया है या लैपटॉप से? तो लैपटॉप। फुल स्क्रीन शेयर करो। तो अब हो रहा है सो। स्टूडेंट लॉगिन में जाओ, ये डालो ईमेल आईडी पासवर्ड तुम्हारा जो भी है। तो यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं डाले थे जब लॉगिन किए थे। बिना यूजर नेम पासवर्ड कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम तो यूज की होगी ना, यूजर नेम पासवर्ड डाली होगी, तो डालना पड़ेगा। यूजर नेम कुछ पासवर्ड होगा ना। ईमेल आईडी डालो, यूजर नेम मतलब तुम्हारा रोल नंबर का जो ईमेल है वो वाला डालो। पासवर्ड तुम्हारा है या नहीं है? पासवर्ड याद नहीं है। फॉरवर्ड पासवर्ड मारो। हम्म अच्छा फिर नया पासवर्ड बना के करेंगे तो हो जाएगा ना सर। हो जाएगा। ओके ईमेल सर। रीसेट कर देना, हो जाएगा। ओके। Excuse me, sir. यस टेल मी। Sir, I have missed previous assignment, so can I was traveling back to college, so can I send you in email? Yeah, you can send in mail and drop me a mail regarding that why you have not submitted. You have write the reason in the mail. Okay, sir. Okay. Thank you. So your college, I mean that your classes will is going to start from 15th, right? 15th July. Yes, sir. I do have some exams to give up here, so Okay. सर Okay, so look कॉलेज तो here. 7 से खुल रहा है, 7 जुलाई। 7 से ओपन हो रहा है, 7 जुलाई। यस सर। तुम लोग क्लास कब से है? सर 9 तारीख से सर शुरू हो जाएगा आई थिंक। अच्छा, और टाइमिंग क्या है क्लास का? अभी कुछ आया नहीं है, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बैच। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस का आई थिंक 15 से सर क्लासेस है। आई होप यस सो। सर। ठीक है, लोग 15 तक लगभग कंप्लीट कर लेंगे क्लाउड। तो कुछ कुछ मैं तुम लोग का चैलेंज ले दूंगा होमवर्क में, उसको कंप्लीट कर लोगे तो हम लोग जल्दी कर सकते हैं और कुछ डिस्कस क्लास में करेंगे। तो सर हर कोर्स लैब कंप्लीट करने का डेडलाइन कब तक है? 15 तक कर सकते हो, ऐसे तो है 21 तक तुम्हारा कोर्स का है ऑफिशियली, 21 सर तो जुलाई तक। कोर्स का एक्सेस हम लोग के पास कब तक रहेगा? कोर्स एक्सेस 180 डेज का आई थिंक है तुम लोग का, 180 डेज, 180 ओके। 83 कुछ होगा। कोर्स कंप्लीट के बाद भी तुम एक्सेस कर सकते हो रिसोर्सेस, लेकिन तुम लोग सर कंप्लीट कोर्स में करके मेनली लैब और नॉलेज चेक ही कंप्लीट करनी है। लैब करना, नॉलेज चेक, उसके कंटेंट को भी जाना, उसको एग्जाम वगैरह जो भी है, मॉडल एग्जाम ये सब देना। और एंड में जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा सबका सर्टिफिकेट कलेक्ट होगा, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट। उसके लिए गूगल लिंक जाएगा तुम लोग के ग्रुप में, वहाँ पे सब लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसका डेडलाइन रहेगा। वो नहीं करोगे तो फिर तुम लोग जस्ट टाइम। हेलो। हेलो।
Is the class is over? Yeah, am I audible, guys? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yeah. sir. So we were discussing about. Let me share the screen. So we were at that BPC peering connection. Can you see the screen? Hello. Yes, sir. Yes. Yeah. So in this case, like the first case was full centralized device connections, and afterwards that we have seen there was a mesh connections, and there was two cases which where we will connecting the multiple VPC. In the first way, if you use centralized hub devices, and or where you will connect that all the VPCs, where we have used the services transit gateways, right? And if you'll move ahead with that, the next one, let me show you with this, you know, uh, this was the first case. Yeah, mesh architecture. Just look at there. This is the mesh architecture where you can see there will be a VPC, and which will be connected to one another. We have VPC A, B, C, D, and so on, and all the VPC are connected to one another. Like previously, we were connecting to the transit gateways, where it was operating with the central devices, right? And there all the VPC were connected, and here in this case, if you see, we have that account 1 and 2, and in all the cases, you'll find that uh, that the VPC A is connected to VPC B with the pairing connections. Then A is also connected to D, A is also connected to B and C as well. And similarly, B is also connected to C, D, and A, and D is connected to B, A, C, right? So this is the kind of which type of architecture is, guys. So this is called as a mesh architecture, right? Now, how do you establish BPC pairing? Like you have BPC A and BPC B. There you can see the IPs, and there we are connecting to the peering connections A and B, and B is also connected to A is also connected to B, right? And there you can see your BPC route table, BPC A route table, and then we have BPC B route table. Accordingly, they have that mentioned that the local detail destination IP, and then the target is local. Accordingly, 10.1.0.0/16, and which is for BPC AB peering connections ID. This is for this VPC A, which will be connecting B to A, and then if you connect A to B, so there you have to mention in the target this IP you have to. It will be mentioned in the route table like 10.2.0.0/16. So you can see under BPCA route table. So the destination is 10.2.0.0/16. Here you can see, and in this case, BPCB route table, you see that their destination is 10.1.0.0/16, right? Accordingly, you can pull that. Now coming to the next, like BPC peering does not support the transit peering. You can see VPC A, B, and C, all the VPC were connected to one another, right? And we have that peering connections where VPC A can get that. VPC A can send a message to B and C. Like VPC A can get and send a network traffic to VPC B, and in this case, like VPC B can get send the network traffic to A and C, because B is connected to both the VPC B and C as well, and B and A. And similarly, C is connected to the VPC B. Accordingly, you can check that all the connections. Another is pairing configuration with a specific route. You can see, one subnet is under this VPC, and others, if you have a subnet and instances under particular VPC, so you can refer to that from both the peering connections A and B. Like we have that all instances. Like here we are creating one instance, but if you have multiple instances, that also you can connect, right, under the different VPC using peering connections, right? So VPC A, B,
Similarly, BPC-A subnet route table equals C and BPC-B subnet route table. So here you can see the target is local and destination is 10.1.0.0/16. Just now we have seen, and this is for another BPC route table. And for all cases, like if you use the use cases for the peering to one BPC to access centralized router or centralized resources, like you have the file sharing VPC, another is a customer share VPC and Active Directory VPC. So there was an IT department that you have seen, like there was a one scenario where different IT department where different VPC you have configured, and then you are creating connecting to transit gateways. That was a centralized process at that time we have used. But here this is the case of your mesh connections or mesh architecture we are using it. So for each and suppose you have a file user one VPC, so the file user one VPC pairing connection should be connected to the file sharing VPC. Then you have a customer one VPC that should be connected to the customer service VPC. I mean, each and every will be dedicatedly connected to that particular VPC. Active Directory VPC we have, customer VPC, file sharing VPC. All the VPC will be connected to each and every customer. Those who are related to that work. It's not one customer. If you have multiple customer who is handling the customer service, I mean the VPC, and those who are connected, they're supposed to connect to the customer VPC. So on that customer 1, 2, 3, all should be connected to VPC peering connections. It will go as with that. Similarly, if you have Active Directory users, so on that case, it will be connected to VPC peering connections and where we will provide the Active Directory services. So this is for the one user they have given. If you have a multiple user related to that directory or Active Directory, so you have to connect all. Similarly, for the customer service, similarly for this file sharing services. So you have to connect accordingly. And here you can see there is a BPC connectivity with AWS private link architecture. Like we have that one BPC for the particular customer BPC subnet, where you can see instances we have BPC endpoint elastic network interface. Similarly, we have a network load balancer, which is connected to the instances and which will be under service provider VPC subnet. So this is your service provider VPC, another your customer VPC, and both you are connecting. So here no peering connection is needed when the using AWS private link with the network load balancer. So there is no peering is connected because we have connected two things. So just remember this: if you have BPC endpoint elastic network, so this is one of the link we are creating through this load balancer. So you can directly interact with that BPC right over internet. So for that case, no, there is no need of peering because also you can see like this is the only one connections where one-to-one devices were connecting or one-to-one network is connecting under the VPC. So like customer consumer VPC we have, and then we have a service provider VPC, or you are using customer VPC like earlier we have seen, like we are using that the customer VPC. Similarly, here you may have like a customer or Active Directory VPC, or you're connecting like consumer VPC, or you have that service provider VPC, right? So like that way you can establish direct one-to-one VPC is connecting. So you can go ahead with the VPC endpoint elastic network you can use, and along with that load balancer, right? Network load balancer. So no need of connecting that particular peering connections here. You can use the private link to connect your VPC. Now you can just go ahead with the key takeaways. Just understand where you will use the peering. So peering is very important to understand. Like you have understood about that central hub connections, and this is your peering connection for the mesh architecture. So BPC peering establishes a one-to-one peering networking connections between two BPC to provide a private network traffic routes. The first thing that we have seen already. Another is like a BPC peering does not incur cost, but transferring data across the availability zones and the regions does. VPC peering can provide a network traffic flow between the different AWS account and AWS region that we have seen already. VPC peering does not support a transit VPC peering relationship. Okay.
And then if VPC classes interdomain routing, I mean CIDR block overlap, they use private link with the network load balancer to establish the VPC connectivity. So this last one which we have seen just now, where we don't need that peering connections. So there we require that. This one is very important. Sometimes asking in your exam, global certification exam, this type of questions. If VPC classless interdomain routing, CIDR block is overlap, understand this. Then you can use this private link with the load balancer to establish the VPC connectivity. Done. Now we have a guided lab for creating a VPC peering connections that we will see in the next class. तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लैब करेंगे. ठीक है. देवश्री मैडम कनेक्ट की है क्या? देवश्री मैडम आर यू देयर? Just let me ask her whether she will take class or not today. Guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Just give me a minute, then we'll start the session. Okay, madam, you can continue. Guys, we'll see in the next class. Guys, which chapter we have left? Which chapter we are doing? Ma'am, we completed the 10th number. 10th number. Okay. Is my screen is visible to all? Yes, ma'am. So today will be your last class for Linux.
because I'll be just guiding you with the other chapters, and these chapters are basically after 11th are basically your self-based chapters, and go through it. And if you'll have any sort of doubts, so you can just ask me to arrange one more doubt clearing session. Okay. So here we will be talking about managing networks and all. So here already you know that in your particular class, I have heard that you guys are going with IP address and all these things. Like in AWS also you are configuring some of the things where networking part is there. But here only a few things has been there. Like again, you need to establish the SSL station. Then after you will be checking out that the this particular Ethernet address is associated with the network or not, right? So for that you need to check with this particular command, that IP link. So it will be showing you what are the connected links are there, and broadcast address, multicast, Ethernet address, everything will be there. Like the broadcast address is this one, Ethernet address is this one. So these are the things that it will be there. And if you want to check with your current IP address and the net mask of the interface, so you will be using this particular command, that is address. It will be basically showing you the address, and you need to use with the option that is BR, and it can show you that IP address and net mask address. Up means right now it is activated, right? It is working. Down means it is not in active mode. So these are the two states you need to just remember. Next, if you want to check with the Ethernet interface, what are the different interfaces are there? Now for that also you can just use this particular command, IP-S, then link show Ethernet. So these are the details of these things that you can get it, like how many byte, how many packets has been sent, what is the error, what are the drop packets are there, how many is carrying on, and how many is have gone with the collision and all. So this is your transmission details, and this is your receiving details, that what are the packets, how many packet you have received, how many has been dropped out, and all these things will be there. The details will be there. Now, if you want to check with the router information, that the routing information and all, so you can just use the command called as IP route. So you will be getting that the router, how means what is the IP address of your router, what is its static metrics, and the Ethernet number, the kernel scope links, all these things will be there. Basically, it is this particular command, IP route, is basically used for displaying the router information and all, right? Now after that, if you want to check with the router whether it is accessible, right, whether it is receiving, means like it is got connected or not, so you can use the command called as a ping and -C3 and the IP address, like the way that when normally if you'll be using your Windows terminal and command line, you will be simply writing ping then the IP address. So you will be getting the 4 replies like this only. So first reply, first pinging will be, it will be get dropped, and rest other will be get reverted back. So once this 3 will be get revert back, so it means that it shows that this particular IP address has been connected. And if you are getting no reply, so it means that instead of this particular 3 lines, if you are getting something else, that no reply or something like that, so it means that you are losing the packet. So here, that is why you can just check it. 3 packets has been transmitted. These are the 3 packets, 1 2 3, and 3 has been received and 0 is lost. Okay, so how much time it has taken? That is 49 millisecond it has taken. So these are the ways that you can check with your basically connection. Ma'am, Yes. ma'am, what is the use of -C3? Which one? These are the options. These are the options that you can just check with that. Already I have told you that in the one chapter we have talked about the getting help from your in manual page, right? So just check with the details, man space ping. So you can get the details, what is C3, what are the different options also, you can play with that, right? So check with that and just do it.
The next is stresspathclassroom.example.com. So this is what, this is an website, right? So if you want to check how many hope counts has been gone in between the local system and with the link that has been there, so you can just use the command call as a trace path. So trace path will be giving you the details of hopes between the local system and the system that you want to connect, right? Then if you want to check with the different types of TCP sockets on your basically local system, so you'll be using SSLT. So you can get the state, the receive and send all these different types of ports. You will be getting the different details of this one. Then you can close this particular session and the lab will get finished on this. So basically in case of your Linux, there are the chapters, it starts from 10th, that you will be doing self-paced, and these are very easy chapters. So only the guided exercise, you will go through it and all the steps are already written. So here also what he is doing is starting the lab, and now he is switching the user from your current user, that is from student to operator 2. Okay, then he is asking the password, so you can just check the password is red hat. Okay, now from the student it got changed to operator 2. Okay, then after, if you want to generate the SSH keys, already we have discussed about in the one chapter that SSH session, what is SSH session, why it is required, how to establish the SSH sessions from the remote location to the another device. So here right now you are generating some keys, right? So for that you will be using SSH keygen. Keygen means you will be generating the keys. Then after you will be getting this short of, this is the way that you will be getting the format, and you are basically generating the RSA 3072 key. Okay, then what you are doing, you are basically copying that particular ID to the this particular pair of copying the pair of these keys to the user, that is known as which one, operator 2, which is there in the server A. So you are copying that content to there, and again it will be get copied to that, right? Then after, what you are doing, you are again connecting with which one, server A, because you know right now we have copied to this user where in the server A. So similarly, just give me a second. Now similarly, then after you are doing what, connecting with that one, and then you are checking that whether this session has, this particular thing has been connected or not, right? So you can just check it, it get connected, and then it means that this particular SSH key, what you are you have done, that authentication is get approved, and then you need to close this particular lab. Okay, no, you need to disable from, like you need to exit from this particular session, and then again you need to log in as root user in the server A, and then you can give the password, and now you can just check it, you are right now in the root user in the server A as a admin mode. Okay, so this is how it will be working. Let me give you a little bit idea on chapter number 11 also. Let me check whether you can, yes, the same thing, correlation is that chapter number 10 and 11, go through it. Okay, now there are little bit concepts are there, that is networking, TCP IP model, okay, application layer, transport layer, internet layer. So these are the different layers has been there, and what are the different protocols will be you get used in this one also, this get mentioned. Okay, just go through it properly, you can get the details. It will be also talking about IPv4 networks, IP subnet mask, okay, broadcast address, everything it will be in detail. So you just go through it, chapter number 11. Yeah, this one is installing packages and software packages. So here it is again very easy chapter. Only you need to go to the terminal, and then you need to like right now, suppose if you want to check the information whether this particular package is present or not, so you'll be using this particular command, and you can check with the different options and the version that you are asking for. So you can check it, and then later on if it is not present, then you need to download it. So just
You just go through with chapter number 11, 12, accessing Linux file system. So again, this one we have already talked about, like how to access it. Like access means how to get this, okay, how to use it. So you need to start it, then connect with server A, then you need to switch this particular user to the um, root user, and it should be in the admin mode. Then you need to create what this particular directory under this directory. Okay, so these are the also ways that you can create it. Then you need to use a UUID, that is user ID, you need to create, and all these things. Then you are doing what? Mounting is nothing but, like, for example, cut paste kind of thing you are doing there. Okay, so mounting is another way to do this thing. So what I need is you go through it. How many days you need to complete it, guys? Up to chapter number 15. Today is 1. Ma'am, 9 July is the last day. 9 July is the last date. Okay, then can you just do it within like 5th Saturday tak? No, ma'am. 9 July is the last date for accessing this particular terminal, I think, right? यही है तो? या वो नहीं याद है? हाँ? Accessing the course is the last date is on 9 July. हाँ, वो है ना, 9 जुलाई लास्ट डेट है एक्सेस के लिए। वो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा दे के रखी रहती हूँ कि कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार अगर बच्चों को किसी को डाउट होता है तो मैं उसको फिर से रिबैक कर सकते हैं। तो 5th तक अभी तो 11th खत्म हुआ, 11 नंबर चैप्टर, और कितना चैप्टर बाकी है? बस और 2-3 चैप्टर्स है। 5th तक आप लोग कर लो। उसके बीच में अगर इफ यू हैव द डाउट, देन मंडे और ट्यूसडे आई विल बी टेकिंग योर सेशन। मैम ये क्लाउड का भी थोड़ा सा बहुत सारा मिलता है वो असाइनमेंट रितु, आई एम नॉट हैंडलिंग राइट नाउ विद द क्लाउड। टॉक विद अंशु सर, वही करेंगे जो करेंगे, ठीक है? तुम मैम इसका हम लोग ध्यान गाइडेड देते हैं। टाइम लागुच तो ସେଇ 20 हाँ ठीक ଅଛି हाँ मैम गाइडेड क्या एक्सरसाइज टे टाइम लागुच तो ସେଇ 20 लेट होଉଛି कौन मैम गाइडेड कम एक्सरसाइज बहुत गाइडेड एक्सरसाइज? मैम गाइडेड एक्सरसाइज कला वाला ଟିକେ टाइम लागि होଉଛି ट्राई करियो 5 तारिख सुधा छाड़ीबा Obviously, see, the thing is, it will take time, but you need to finish it, right? Why I'm saying कि if you'll be able to finish on Saturday, then you will have a Sunday. Monday I will also give कि ठीक है, मेरा उस दिन क्लास रहता है, मोस्टली मैं बिजी रहती हूँ उस दिन, तो 6 and 7 आप एक बार रिव्यू कर लो। 8 को I will be just checking out if anybody is asking for the doubt clearing session in the group, then I will be taking, else I will consider कि आप लोग उस चीज को समझ चुके हो। Okay, all of you are good with this one? Yes, ma'am. है मैम। Yeah, ठीक है, you just go through it. If you'll have any doubt, then we will, I will be asking. Otherwise, you just ping me in the group because I'm there, or I will be just asking. ठीक है, I will take a poll मैम and एक डाउट था हाँ, मैम लैब में सारा टेस्ट कैसे सक्सेस नहीं हो के अगर कुछ फेल हो जा रहा है तो क्या वो कंप्लीशन में इंक्लूड होगा ना वो तुम स्टक डाउन हो जाएगा 50% कर चुके हो? हाँ मैम मैं 50 हो पहला तो वाला बैच मिल गेट गया ड्रॉप। मेरे को हाँ, तो बस वही है एक्चुअली वो सर्टिफिकेट। ओके, ओके 50% जो लोग भी कर दे रहे हो, मैं उन लोग के लिए एनेबल ऑलरेडी पहले से ये बताया हुआ था कि 50% तक मैं आप लोग को दी हूँ कि अगर किसी चीज में भी अगर लैब का इशू होता है, सर्वर इशू होता है, या लैब आवर निकल जाता है, देन ऑल्सो दिस पीपल जो लोग 50% भी कर चुके हैं उन लोग को भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ठीक है, मैम ये वही एडमिनिस्ट्रेशन वन का था तो मैम 2 के लिए पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा 2 के लिए कहा मैंने दिया है क्या एक्सेस आपको? नहीं पता मैम पूछ रहा नहीं हूँ दिया है, नहीं है राइट नाउ। ओके अकॉर्डिंग टू द डिमांड इट इज एडमिन 1, वो पहले अच्छे से कर लो, वो मोर देन इनफ ठीक है है आप मैम लोग के लिए। जी मैम मैम ठीक है, 50% कोर्स कंप्लीशन या फिर 50% लैब? 50% बोथ। ओके मैम 50% अगर आपका टर्मिनल पे दिख रहा है, अगर कोर्स 50% कंप्लीट है, तो यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट, दैट इज क्रेडली सर्टिफिकेट। एंड मैंने वही बोला हुआ है कि यू नीड टू पे, आई मीन टैग मी इन द लिंक्डइन। ओके, ओके मैम देन मैम हम हेलो मैम। मेल एक्सेप्ट हमर 50% कंप्लीट होला पर मेल गुटे आस्तिला सीत पे हाँ, that is basically the credly
मेल you will be getting. Enroll yourself into Credly, मतलब आप लोग जो आपका किट का मेल आईडी से इसको रजिस्टर करे हुए हो, उसी से लॉग इन इनटू Credly, you will be getting the certificate plus the badge. Okay? हेलो मैम। Yes. मैम मैम प्लीज एक्सटेंड अप टू 7th of July What? मैम दिस डेडलाइन that This you have deadline told. cannot be because अभी पहली बात तो यह है कि अभी जो बच्चे न्यू हैं उन लोग को एनरोल अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी बेसिकली बैकग्राउंड से वो लोग अपना पोर्टल अपडेट कर रहे हैं, सम मेनी चेंजेस दे आर डूइंग, तो ये अपडेट होना अभी मुश्किल है। आप लोग उसको 9 तक क्या कंप्लीट करो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड हैव इट विथ यू, उसमें क्या दिक्कत है? कम ऑन गाइस, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट एंड ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, जानते हो सब ना। मैम स्मार्ट का नहीं है मतलब मैम, उसको मतलब एक एक चीज को अच्छे से समझ कर लैब करना में थोड़ा टाइम तो लग रहा है। तो एक काम करना, ओपन सोर्स से डाउनलोड कर लो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल बॉक्स में फिर अपलोड करके यू कैन हैव दैट वन, वो आपका लॉग आउट ही नहीं होगा कभी भी, यू कैन डू इट दैट वे आल्सो। मतलब मैम हम लोग अपना लोकल मशीन से वो लैब कनेक्ट कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना पड़ेगा रेड हैट का, देन VMware में उसमें आपका वर्चुअल बॉक्स में यू नीड टू डू द सेटअप, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जिस तरह राइट नाउ हाउ यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली वर्किंग इन ए वर्चुअल वर्क स्टेशन, राइट? सो यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन दैट। ओके, हाँ समझ गया। चलो, okay then guys, well let me see you all guys on Monday. I'll be taking one poll that do I need to take any extra session or any doubt clearing session. So based on that polling, then I will be taking your sessions. Else, I will consider that all of you had successfully completed and understood the lab part at least. Okay. So theory part, let it be with you as a screenshot, and you can just use those screenshot later on also. Okay. So from tomorrow onwards, your answer sir will be carrying forward with your AWS, and I will be not taking your sessions because rest four chapters are basically your self-based chapters. You need to go through it because all is interrelated with each other. So go through it, complete it. If you'll have any doubt, then you can just ask me. Okay. Okay then guys. Okay. Bye bye.